Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the mechanism of enzyme action, which is also called as catalysis. So let's move to the lightboard. So mechanism of enzyme action. That is the topic. The mechanism of enzyme action, it is also called as catalysis. Clear? So dear students, mechanism of enzyme action means कि enzymes किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से जो किसी भी chemical reaction का rate of product formation है उसको increase करते हैं. So first of all हम इस हवाले से बात करेंगे dear students that दो चार terminologies हैं. अगर एक question आता है तो उसके हवाले से जिसको हमने basically उसमें add करना है. We have to add what is substrate, we have to add what is active site, and we have to add the sites of active site or the regions of active site, and then after the models. Clear? So the enzymes, they act upon a substance which is called as substrate. Clear? So substrate, basically, it is the substance at which an enzyme acts. For example, it may be a protein, it may be a carbohydrate like starch, or lipid, etc. etc. Clear? क्योंकि मैकेनिज्म को समझने के लिए दो मेन चीज़ें हैं. रिएक्टेंट साइड पे हम देखेंगे हमें एंजाइम का पता होना चाहिए. दूसरे नंबर पर जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने याद रखना है. Any substance at which the enzyme acts is called as its substrate, and here are a few examples: starch, lipid, glucose, proteins, nucleic acids, etc. etc. Clear? Now I'm going to show the equation which tells us about the mechanism of enzyme action. Here is the equation which explains the mechanism of enzyme action. It says enzyme plus substrate it will form enzyme substrate complex and after the formation of enzyme substrate complex there is the formation of products and the enzyme is
again available for another reaction. It is represented by ES, and this becomes ES complex, and P for products, and E for enzyme. ES complex, and so this is the reactant side and this is the product side. Clear? So this is how the enzyme acts. Enzyme, it binds with the substrate and it forms a temporary structure which is called as ES complex, or which is also called as enzyme substrate complex, और enzyme substrate complex जैसे बनेगा so catalysis start होगी and it forms the products and the enzyme is again available. So here is its substrate. Now here has been formed the enzyme substrate complex, and over here the products are formed. These are the products. Clear? So this is how we can represent it diagrammatically. Now, and this one is the active site. इसको हम डिटेल से भी देख लेते हैं. It also requires explanation in this question. So we have to understand the concept. हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब दोबारा से इस टॉपिक के अंदर ये शामिल है. So as per the topic मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. So a definite charge bearing site on an enzyme that allows binding of substrate and then catalysis. Clear? Now, the regions of active site. तो डियर स्टूडेंट्स कितने रीजन्स हैं एक्टिव साइट के? आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ. सो इट हैज़ गॉट टू रीजन्स. It has got two regions. The first one is the binding site, a binding region, and the second one is catalytic site or catalytic region. Clear? Dear students, what binding site का function? It recognizes the substrate and allow attachment forming ES complex, means the enzyme substrate complex. So that is what the binding site do. Now the catalytic site, it after formation of
ES complex, the catalytic site initiates catalysis, means the formation of products here. And now I'm going to draw the diagram in order to let you clarify what is the binding site and what is the catalytic site. So this is an enzyme, globular in shape. और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो से ऑरेंज कलर से मार्क कर रहा हूँ ये दो जगहों को. So these are the binding sites. These are the binding sites that allows the formation of ES complex. और यहाँ पर जो पिंक कलर में मार्क कर रहा हूँ ये जगह, this is the catalytic site. And this whole structure is this one. This whole structure is the active site. Clear? और ये enzyme, that is an enzyme. Clear? अब डियर स्टूडेंट्स इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए दो तरह के मॉडल्स पेश किए गए थे. दो तरह के मॉडल्स फेमस हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं. द फर्स्ट वन इज लॉक एंड की मॉडल. सो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा नाम से आप समझ गए होंगे लॉक एंड की. सो इट वाज प्रपोज्ड बाय एमएल फिशर in 1890. तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीज़ें अहम हैं. 1890 यानी कौन से सन में किया गया, बाय विच वन, द एमएल फिशर, और मॉडल का नाम क्या था, लॉक एंड की मॉडल. सो अकॉर्डिंग टू फिशर, एमएल फिशर, like every lock has a specific key. In that manner, every enzyme has a specific substrate which binds and forms the enzyme substrate complex. तो इन साइंटिस्ट का ये मानना था कि लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से कि जैसे हर एक ताले की मखसूस चाबी होती है, जैसे कि आपने वो चाइना के लॉक्स देखें तो इन सब की शक्लें एक जैसी होती हैं और उनकी जो कीज़ होती हैं वो भी तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और समटाइम्स वो एक इररेलेवेंट लॉक में एंटर भी हो जाती हैं, लेकिन जब आप उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो लॉक ओपन नहीं होता जब तक कि उसकी स्पेसिफिक वो जो उनसे जो डेंटिकल्स होते हैं वो मैच नहीं कर जाते उसके लॉक के साथ, तब तक वो लॉक ओपन नहीं होगा. तो इसी सेंस में यही सेंस इस्तेमाल की थी एमिल फिशर ने. उसने कहा था कि जो एंजाइम है दे आर लाइक द लॉक और जो सबस्ट्रेट हैं दे लाइक द स्पेसिफिक की. जब तक उस एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर नहीं अटैच होगा तब तक कभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनता तो फिर प्रोडक्ट्स आगे से नहीं बनेंगे.
Clear? So according to him, the active site is a rigid structure. जैसे कि एक ताले की चाबी जो होती है हार्ड होती है, जब तक वो एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट नहीं होगी तब तक वो लॉक नहीं ओपन होगा. इसी तरह से जो एक्टिव साइट है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एमिल फिशर सेज इट इज अ रिजिड structure, it is non-flexible. Clear? So this is how it acts. So here is the lock and key model. So according to him, enzymes are like a lock. So this is an enzyme, it acts as a lock, and here it is the substrate जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल इसी शेप का होगा तो तभी ये वहां पर अटैच हो पाएगा. क्लियर? सो दिस इज substrate and this is enzyme जो कि लॉक की तरह और ये ऊपर चाबी की तरह काम कर रहा है. क्लियर? तो तभी जाकर जो है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे और प्रोडक्ट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल. लेकिन ये तमाम एंजाइम्स के लिए तो ये जो एंजाइमेटिकली जो कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं उनके लिए सूटेबल ना रहा. आगे जब एडवांस स्टडी होती है तो पता चलता है कि सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस पे ये वाला जो मॉडल है ये फिट नहीं आ रहा. सो इन 1959 there was a presentation of another model which is called as induced fit model, and that is the more acceptable model now onwards and from that very time. So it was proposed by Daniel Koshland और कब पेश किया गया था? इन 1959. क्लियर? तो यहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें याद रखनी है. इट्स प्रपोजर एंड द नेम ऑफ द मॉडल एंड साइंटिस्ट. सो ये तीनों चीज़ें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू हिम, सो इसे इट इज़ अ मॉडिफाइड, it is a modified form of lock and key model. Clear? Modified form. याद रखिएगा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो induced fit मॉडल की ये बेसिकली किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल. सो अकॉर्डिंग टू हिम, the active site is flexible, पहली बात, not rigid or hard, and when the substrate attaches to active site, it induces change in the shape or structure of active site or the enzyme at which it is attached and favors. So just like here is an enzyme, and let's suppose
This is the substrate. It looks that it will not exactly fit upon this. So as soon as it attaches to the you can look over here, आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट की ये वाली जगह और ये वाली जगह जैसे इसके ऊपर आया तो उसकी एक्टिव साइड की शेप को थोड़ा सा ऑल्टर किया गया, उसको इंड्यूस किया गया, जैसे इंडक्शन हुई तो उसके हिसाब से फिट हो गया. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल. तो सबस्ट्रेट जैसे ही अटैच होगा एक्टिव साइड के साथ तो वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन उसके अंदर करेगा, अल्ट्रेशन करेगा, और ये तब ही पॉसिबल होगा जब एक्टिव साइड जो है वो फ्लेक्सिबल होगी, वो रिजिड नहीं होगी. तो ये एंजाइम, ये एक्टिव साइट जैसे ही यहाँ पर अटैच हुआ, सो इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द shape of the active site, so it becomes fit upon the substrate, forming the enzyme substrate complex, so forming the products. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.